everyone. Welcome to Motilal Oswal Discover. आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनियन बजट 2022-2023 के बारे में डिटेल में जानेंगे। यूनियन बजट 2022 प्रेजेंट हुआ ऑन 1st February 2022 with amid high expectations. Although Economic Survey ने forecast किया around 9.2% real GDP growth in the financial year 2022, followed by 8 to 8.5% growth in the financial year 2023, markets anticipate कर रहा था कि government announce करेंगे measures to support weak consumption. Instead, government ने continue किया on its course जो quality of expenditure improve करेगा by focusing on investment growth. फिर भी higher than expected fiscal deficit और borrowings have disappointed the bond market और ये push करते हैं benchmark bond yield to over 6.8%. Resisting the temptation of populist giveaways ahead of the 5 state elections in February-March 2022, government on track है और focus कर रहे हैं on long-term structural growth drivers. Growth revival ही government का principal theme था इस budget में. ये माइंड में एक ऑब्जेक्टिव रखते हुए गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया है विथ इट्स फोकस ऑन ड्राइविंग कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स बाय एनहांसिंग सपोर्ट फॉर रोडवेज रेलवेज और डिफेंस सेक्टर्स. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश किया थ्रू PLI स्कीम्स वाइल इकोनॉमी को ट्रांजिशन कर रहा है विथ एन एम्फसिस ऑन अर्बन प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स, EVs, solar module manufacturing, river linking, water connections, etc. फाइनेंस मिनिस्टर ने PM गति शक्ति पर भी फोकस किया है जो अनाउंस किया गया था ऑन October 2021 फॉर सीमलेस बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड इम्प्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ओवरऑल इक्विटी मार्केट के पर्सपेक्टिव से हम बिलीव करते हैं कि बजट बैलेंस्ड है और उसमें कोई अनप्लेजेंट सरप्राइजेस नहीं है. While there remains some room for further capex spending push as government overshoot कर सकते हैं उनके revenue targets को. Given the continuity of policy focus and pronouncements, हम believe करते हैं कि markets will discount the budget and shift focus to rising interest rate regime globally and consequent higher bond yields. Corporate earnings growth that has remained resilient so far in the ongoing third quarter financial year 2022 earnings season. हम estimate करते हैं around 37%, 17%, 14% EPS growth for financial year 22E, financial year 23E, financial year 24E. The forthcoming RBI policy meet on 9th of February 2022 assume करता है greater significance with now respect to the future of liquidity or interest rates. Thus, budget and current और future scenario को ध्यान में रखते हुए हम प्रेफर करते हैं BFSI, IT, consumer telecom, metals and cement from portfolio perspective. हमारी top picks हैं large caps में ICICI Bank, SBI, L&T, Axis Bank, Reliance, Bharti Airtel, Infosys, HUVR, Titan and Hindalco. और मिड कैप्स में अशोक लेलैंड, ओबेरॉय रियल्टी, इंडियन होटल्स, देवयानी इंटरनेशनल, जेंसर टेक, इंडिगो पेंट्स, ABFRL, गुजरात गैस ओरिएंट इलेक्ट्रिक एंड VRL लॉजिस्टिक्स. और अभी हम जानेंगे इस बजट का इम्पैक्ट इन कुछ सेक्टर्स पे. एग्री बजट इम्पैक्ट पॉजिटिव. सेक्टर स्टैंड्स पॉजिटिव. फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर बजट फोकस करते हैं ऑन increasing allocation towards the irrigation infrastructure, startups for agriculture and rural enterprises to drive the sector, lower dependency on import in agriculture produce. Government focus करता है on improving irrigation infrastructure जैसे by linking canals with rivers, groundwater well-based systems, टैंक्स और अन्य रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो इंक्रीज करेगा एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस को. गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लान्स हैं जिसका ऑब्जेक्टिव है ऑफ इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम जो बेनिफिट करेगा एग्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनीज को. ऑटोज बजट इम्पैक्ट नेगेटिव. सेक्टर स्टैंड्स पॉजिटिव.
द यूनियन बजट 2022 ने कंटिन्यू किया टू सपोर्ट व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन बाय प्रपोजिंग द बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी. इसके अलावा ये प्लान करते हैं टू बूस्ट क्लीन मोबिलिटी इन पब्लिक बसेस थ्रू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दैट इज PPP मॉडल. However, a reduction in the allocation towards the rural markets hurt कर सकते हैं rural focused segments को such as 2Ws and tractors जो already witness कर रहे हैं एक steep decline. पर हमारा इस सेक्टर का आउटलुक पॉजिटिव है एज हम अर्ली फेज ऑफ रिकवरी में हैं आफ्टर 3 years ऑफ विटनेसिंग अ वीक डिमांड सप्लाई एनवायरनमेंट अक्रॉस सेगमेंट्स. हम प्रिफर करते हैं 4Ws ओवर 2Ws ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग डिमांड और जो ऑफर करते हैं अ स्टेबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. हमें एक्सपेक्टेड है दैट द CV साइकिल विल मेंटेन द मोमेंटम. Maruti and Ashok Leyland are our top OEM picks. Among the auto component stocks, हम प्रेफर करते हैं भारत फोर्ज एंड अपोलो टायर्स को. कैपिटल गुड्स, इंफ्रा बजट इम्पैक्ट, न्यूट्रल सेक्टर स्टैंड्स पॉजिटिव. कैपेक्स स्पेंडिंग ट्रेंड अनअफेक्टेड रहेगा बाय द पैंडेमिक इन द बजट. इट वॉज इन लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशन ऑफ डिसेंट ग्रोथ. रोड्स कैपेक्स फ्लैटिश रहे और रेलवेज ने विटनेस किया काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ. डिफेंस कैपेक्स कंटिन्यू करते हैं टू फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड वॉज अ की पॉजिटिव. आर टॉप पिक L&T हमारे प्रिफर्ड प्ले है ऑन ओवरऑल कैपेक्स इन द कंट्री, वाइल BEL हमारे प्रिफर्ड प्ले है ऑन द डिफेंस कैपेक्स लेड बाय इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. Within the road segment, हम कंटिन्यू करते हैं टू प्रिफर GR Infra and KNR Constructions को. सीमेंट बजट इम्पैक्ट, न्यूट्रल सेक्टर स्टैंड्स पॉजिटिव. सीमेंट सेक्टर के लिए कोई डायरेक्ट अनाउंसमेंट नहीं था in Union Budget 2022, though the allocation on housing schemes, roads have been raised marginally on a higher base of last year. हम पॉजिटिव हैं ऑन द सेक्टर एज हम एक्सपेक्ट करते हैं डिमांड टू इम्प्रूव गोइंग फॉरवर्ड लेड बाय द गवर्नमेंट्स थ्रस्ट on infrastructure spending along with the pickup in demand from the real estate sector. Cement demand से expected है to outpace clinker capacity additions over the financial year 2021 to 2024E. ये लीड करेगा टू एन इम्प्रूवमेंट इन क्लिंकर यूटिलाइजेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द इंडस्ट्री. हम एक्सपेक्ट करते हैं क्लिंकर यूटिलाइजेशन एक्सक्लूडिंग साउथ इंडिया टू बी ओवर 90% इन द जनवरी टू मार्च पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2024E. ये बूस्ट करेगा प्राइसिंग पावर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ओवर दैट पीरियड. Ultratech is our top pick, followed by ACC and Dalmia Bharat in the large cap space. हम ग्रासिम इंडस्ट्रीज को भी प्रेफर करते हैं. स्पेशलिटी केमिकल्स बजट इम्पैक्ट पॉजिटिव, सेक्टर स्टैंड्स पॉजिटिव. थ्रू द यूनियन बजट 2022, गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है टू फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, देयरबाय रिड्यूसिंग इम्पोर्ट बिल. गवर्नमेंट ने फैसिलिटी प्रोवाइड की है इन डोमेस्टिक कंपनीज बाय इम्पोजिंग कस्टम्स ड्यूटीज ऑन की रॉ मटेरियल्स. ये चेंजेस कस्टम्स ड्यूटीज पर बेनिफिशियल होंगे टू कंपनीज जैसे अतुल लिमिटेड, अल्काइल अमाइंस और क्लीन साइंस. Moreover, the entire domestic ecosystem को benefit हो सकता है from the higher and cheaper availability of raw materials, intermediates, thereby aiding the chemicals space. Consumer budget impact, negative sector stance, neutral. जहाँ पर इस पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई इन द यूनियन बजट 2022, द लैक ऑफ एनी मेजर इनिशिएटिव टू बूस्ट स्लोइंग रूरल डिमांड इज परसीव्ड एज अ डैम्पनर. In fact, lower allocations towards food subsidies and fertilizer subsidies, both urea-based and complex, as well as a 25% lower Manrega allocation are all in sentimental downers. However, हम believe करते हैं कि government increase करेंगे its allocations towards subsidies and Manrega during the year based on the prevalent ongoing economic scenario. ये prevent कर सकता है any material decline in rural disposable incomes. However, given the steep commodity inflation level, rural purchasing power affect करेगा in the interim.
On the other hand, lack of additional GST or cess on cigarettes or marginal reductions in the import duties for diamonds, gemstones or cocoa beans positive है for ITC, Titan and Nestle. Thus, despite relatively cheaper multiples of staples, हमारा preference continued रहेगा to be discretionary such as Jubilant Food and Titan. Among staples, we like Godrej Consumer, Dabur and Britannia. Financials budget impact, positive sector stance, overweight. The extension of the ECLGS scheme और उसके साथ the revamping of the CGTMSE scheme provide करेगा impetus to the MSME sector which has borne the brunt of the pandemic. The linking of post offices with the core banking system or setting up of digital banking units would aid in the financial inclusion and expanding reach. गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजिटल रुपी और गाइडलाइंस को जो इशू होंगे बाय द RBI इन ड्यू कोर्स एंड वुड बी अ की मॉनिटरेबल. द थ्रस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और हायर गवर्नमेंट केपेक्स पॉजिटिव है फॉर CV फाइनेंशियर्स. हायर फिस्कल डेफिसिट प्रोजेक्शंस ने एडवर्सली इम्पैक्ट किया है बॉन्ड यील्ड्स को एंड इट कुड ड्राइव हायर MTM प्रोविजंस फॉर बैंक्स, मेनली PSUs के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज पर, एज वेल एज ये लीड करेगा टू हायर बोरोइंग कॉस्ट्स फॉर NBFCs. हम मेंटेन करते हैं आर OW स्टैंड्स ऑन द सेक्टर्स. हमारी टॉप आइडियाज़ रहेंगी ICICI बैंक, SBI, Axis Bank, SBI Life, AU Bank, Muthoot Finance and Angel One. Logistics budget impact, positive sector stance, positive. The setup of multimodal logistics parks और associated infrastructure ensure करेंगे faster turnaround times और higher volumes. ये improve करेंगे operational efficiency को भी. हमारी टॉपिक्स है VRL Logistics and Transport Corporation. Metals budget impact, neutral sector stance, positive. The continued thrust on infrastructure spending, positive दिखा है for this sector. इस सेक्टर में कोई भी significant budget proposal witness नहीं किया है, but the overall emphasis on capital expenditure by दोनों central और state governments metals के demand को boost करेगा. डोमेस्टिक स्टील की डिमांड बाउंस बैक हुई है स्ट्रांगली पोस्ट कोविड में विच इज़ लेड बाय पेंट अप डिमांड. थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2022 में ऑन स्टील कंजम्पशन 14% इम्प्रूव हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, while fourth quarter financial year 2022 is likely to be better than the third quarter. हम एक्सपेक्ट करते हैं द डिमांड टू इम्प्रूव आफ्टर ओमिक्रॉन सबसाइड्स. रिवोकेशन ऑफ ड्यूटीज बजट में अनाउंस हुआ जो ऑलरेडी सस्पेंडेड है फॉर द लास्ट 1 year when the pent-up demand was strong, is unlikely to have any incrementally negative impact on either demand or pricing. China concerned है about exporting steel while keeping carbon emission at home contained. Hence, we anticipate steel imports to subside gradually. हम maintain करते हैं our positive view on metals with JSPL being our top pick in ferrous और साथ ही Hindalco in the non-ferrous domain. Oil and gas budget impact, neutral sector stance, positive. Through the Union Budget 2022, government try कर रहे हैं to focus on the greener alternative for auto fuels. Accordingly, एक additional excise duty of ₹2 per litre लेवी करता गया on unblended petrol and diesel. यहाँ पे बस marginal decrease दिखने मिला है in petroleum subsidy, while the divestment target for the year has been revised down. Blended fuel के demand improve होंगे in line with the stated aim of 20% ethanol blending by 2025. However, the increase in excise duty impact नहीं करेंगे on the profitability of the OMCs, IOCL, BPCL and HPCL. Capex of upstream and downstream companies increase होगा amid the increase in the basic custom duties. Removal of concessional benefit on the CNG kits bear करेंगे impact on the CGD companies जैसे IGL, MAHGL और
GUJGA जिसने एंजॉय किया है हाई नंबर ऑफ CNG कन्वर्जन्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक. Real estate budget impact, neutral sector stance positive. While much was anticipated in the real estate sector, overall बहुत ही कम mention किया गया on this sector in the budget. Besides, government ने benefit extend नहीं किया है for new affordable housing projects यानी AFH, tax holiday और AFH loans additional interest deduction को. That said, we do not foresee any negative impact on the listed real estate space as the classification cap of rupees 0.4 crores for AFH units, the recent increase in commodity prices have made AFH projects unviable for most of the top 7 cities. Hence, listed players के पास limited exposure है to the affordable housing projects. Telecom budget impact, neutral sector stance, positive. Domestic manufacturing of devices propel होगा by design-led manufacturing जो build करेगा a 5G ecosystem as part of PLI, duty concessions to parts of transformers of mobile phone chargers or mobile camera lens and certain other items. आगे चल के रोल आउट ऑफ 5G मोबाइल सर्विसेज होगी विद इन 2022 to 2023 बाय प्राइवेट टेलीकॉम प्रोवाइडर्स और ये एक पॉजिटिव ड्राइवर बन सकता है फॉर द सेक्टर. Thus, भारती एयरटेल रिमेन्स आवर टॉप पिक इन द सेक्टर. उम्मीद है कि आपको हमारा ये यूनियन बजट 2022-2023 का सिनॉप्सिस वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.